I'm bringing you lights, camera, and action. A brand new show every Wednesday at 7 p.m. only on Awaz Entertainment. Hello everyone, good evening. You're watching Lights, Camera, Action. I'm your host, Kubra Ali. I hope you all are doing good, having a good evening, and ready for tomorrow's day. So tonight, as you know, I have a guest in my every episode. I have a special guest with me. So tonight with me is sitting very special guest who's a singer, composer, writer. So let me welcome Miss Muneeba Sheikh. Kubra. I'm well, thanks. How are you? I'm doing good. And how you been? Busy? Busy, right? Thank you so much for having me. It was long due. Absolutely. We were planning for so long. I know. So and my pleasure having you in my show as well. Yeah. So how's it going? How's your September going? You know what? It's been a busy summer. And post-COVID especially, बहुत हर लिहाज से events, महफिलें और शादियाँ. I know everything is open now. Thing, so. हाँ, it's nice too कि सबसे मुलाकात हुई and everything. Yeah. But I would say it's a busy year since January, right? Yeah. Moreover, the summer was ज़्यादा एक peak. I know. You've been somewhere during holiday season or something? Or just busy with work? No, I actually took out a week and went away cottaging because I love cottaging. Oh, nice. Yes, I love being up north. Oh, nice. Yes, so I did take that time out and just go relax and not do anything. I know, I think we need that time for ourselves. हाँ, हर इंसान को ज़रूरत होती है. साल में एक बार या दो बार तो होना चाहिए. होना चाहिए, बिल्कुल. You revitalize, you re-energize, and you get back at it. So. Right. And what are your plans like in the future now? Like for the winter, fall, any plans? A lot. Yeah? There's a lot to do. Yeah, there's a lot of pending stuff that has been stalled because of events and शादियाँ तो उसको follow up करना, catch up pretty much हो रहा है, right? So working on that. Oh, nice. So चलिए Muneeba, let's continue with what I'm really excited to ask a lot of questions from you regarding your event happened recently. Do you think of me? Yes. So I want first elaborate this amazing event and please let us know in brief what this event was about, because I know a lot of people know about it, but the audience who doesn't know about it, right? So I want you to just explain us in brief, then I'll have a lot of questions to ask you. For sure, for sure. So Do You Think of Me जो है वो एक गाना था that I composed and wrote partially. Nice. Wow. Right? So it's a fusion-based song. So half of it is an R&B song that I wrote and composed, and the other half is a kalam by Baba Bulle Shah. Okay. Right? And I composed that part too, and I mixed it together, making it an animated video for South Asian seniors and advocating through my art. So
I think based on that, that's what Do You Think of Me is. And the way it shows the circle of life, बचपन से लेके बड़े होने तक, और फिर वो आपके रोल स्विच होते हैं, कहाँ आप अपने माँ बाप आपकी खिदमत कर रहे होते हैं, चलना सिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, ग्रूम करते हैं, तो वो रोल्स चेंज हो जाते हैं कि आप उनके साथ करते क्या करें हम, या ऑफ कोर्स। तो जब हमारा टाइम आता है हमारे पेरेंट्स का देखभाल करना, उनके बारे में उनको देखना, तो जब बात अलग हो जाती है। बिल्कुल वो चीज़ नहीं रहती जो चले, जैसे माँ बाप हमारी देखभाल करते हैं, अपब्रिंगिंग हमारी जो करते हैं, वो इतना दे क्या कहते हैं कि वो इतने सैक्रिफाइसेस करते हैं। जब हमारा टाइम आता है देन वी गिव अप। व्हाई? तो आपको क्या लगता है? आई थिंक it's not a matter of giving up, and I won't speak for everybody. ये नहीं है कि हर कोई जो है वो एक ही उसमें हम डाल दें कि भाई सभी ऐसे हैं, नहीं, right? But majority जो है वो, and I do say this very honestly, because practically कि वक्त बदल गया है, right? वो financial reasons हो कि पहले एक घर चलाता था तो सब खाते थे, या now everybody has to work. The kids work part-time as well. The wife works as well. It's a busy life. Everybody contributes to pay those bills, right? Absolutely. So it's majburi as well. But the other part of it is simply, sadly, where they don't want to. And that's a cultural thing, where before it was expected to be taken care of from generations to generations, right? But now they don't want to. And I don't mean to offend anybody, but I like to be blunt about the fact the bahus don't want to take care of the in-laws. Right? What happens is, until there is your son or daughter, they're going to take care of you. But suddenly when there's another person in the family, then I think the issues start. But idhar bhi masla hai na कि the bahu don't want the sons to take care. Right? It takes away from their time. It takes away from their children's time, right? Or it takes away from the time that they give to their parents, right? And same way around, the son-in-laws don't want to take care of the sas and sursur because it's an extension of a financial burden. Absolutely. And Muneeba, I think more of the son-in-laws, they're about daughter-in-laws who catch the thing up, right? They are always talking about daughter-in-laws, not son-in-laws. This is in our culture. The Desi culture. They are like, okay, son-in-law का काम नहीं है. But daughter-in-laws, उनका ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत है, उनको they have to do it no matter what. They have to do it. But son-in-laws को कोई इतना वो नहीं करता. जब बात दामाद की आती है, दामाद को तो बड़ी royally बिठाते हैं. Royally करते हैं ना, कोई काम नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं उनको. The moment it comes with the daughter-in-laws, then it changes. Absolutely. Yeah, and that's sadly the South Asian perspective of a lot of things culturally जो हमने accept की. Yes. Previous generations ne of course. They went through it. They went through the struggle. कि वो जायज़ है या नाजायज़ है, उन्होंने किया. I think even now, if you see back home and stuff, it's still going on. Minus, ठीक है, awareness आ गई है to a certain extent, मगर it's still there. It's still there. And when I believe like people who are coming from there now, even want to adapt the same thing over here as well when they know it's just क्योंकि वो वही mindset लेके आ रहे हैं. देखिए जिन लोगों ने that were from that household environment, right, from a lower income society, right, that did not live in defense and all these nice places where they were copying and following the Western culture, right? तो वो तो वही चीज लेके आएंगे, right? अब वो अलग बात है कि वो यहाँ आके उनकी आंखें फट जाएं because they've not had those resources in their life ever, right? English तो उन्होंने अपने बच्चों से सीखी है. जब बच्चे kindergarten जाना शुरू करे तो उन्होंने भी yes, A, B, C, D और fluency जो है वहाँ से सीखी चीज है. So you know what? They're bringing that here, right? And it's nice to have it if it's a positive cultural value. मगर अगर जो चीजें
जनरेशनल गलत होती है ना, वो आपको वहीं रोकनी चाहिए, ठीक है? जब आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपके साथ वो चीज़ होए जो आपकी वालिदा के साथ हुआ था, तो फिर आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए, या अगले वाले अपनी बहू के साथ भी ये नहीं करें, नेक्स्ट जनरेशन। एब्सोल्युटली, अवेयरनेस आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इन द फ्यूचर वी हैव टू बी अवेयर एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट, दैट टू डू ऑल दैट व्हाट वी हैव बीन थ्रू। या वो जब तक अपने पे गुजरती है ना, तो फिर उस वक्त एहसास होता है। बाकी नहीं होता, दूसरी की बच्ची नहीं लगती आपको, मतलब वो किसी की बच्ची है तो घर की नहीं है, अपनी बेटी पे गुजरेगी ना, तो फिर आपको एहसास होता है। I know, unless you experience it in your family, you will never understand this. बिल्कुल बिल्कुल। बातें तो करेंगे पीछे, बहुत गॉसिपिंग होगी, अरे ये इसने ये कर दिया, इसने, जब आपकी फैमिली पे आएगा, then you will know. It changes. Absolutely. It's a different story. Absolutely. बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। ओके मुनीबा, जैसे मैंने मुनीबा का इवेंट, मैं गई थी आपके इवेंट में, बहुत बहुत अच्छा इवेंट था, डू यू थिंक ऑफ मी। तो मुझे ये बताएं, मैंने वो वीडियो भी देखी थी और वीडियो देखते वक्त मेरे आंख में आंसू भी आ गए थे। इट वाज लवली वीडियो। तो मुझे ये बताएं, जो आपका ये टाइटल है डू यू थिंक ऑफ मी, मुझे इसके बारे में आप समझाएं कि आपको ये कैसे है ना दिमाग में आया कि आई एम गोना कीप दिस टाइटल फॉर माय वीडियो एंड माय इवेंट। Do you think there was two reasons behind this? One was obviously I was relating it कि जब आपके माँ बाप आपके लिए कितना करते हैं, right? You know कि उनके पास जूते नहीं होते, वो make sure करते हैं कि आपको पहले चीज देते हैं, absolutely, right? अपने मुंह का नवाला हल्का करके आपको पेट पालने की कोशिश करते हैं। I'm a parent myself, I can relate, right? तो when it changes on them and they feel neglected or hurt, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, तो वो यही सोचते होंगे ना कि ये मेरे बारे में पता नहीं सोचते हैं या नहीं सोचते। I know. Right? The other line is obviously, do you think of me? Do you miss me? Do you love me the way you loved me? Right? Wow. So they're obviously thinking that. The other thing also is, because it's senior related, Alzheimer dementia plays a big role. Okay. तो उसमें ये है कि वो जब अपनी मेमोरी लॉस में जा रहे होते हैं, तो वो बच्चे जो हैं जो केयर गिव कर रहे होते हैं या क्लोज फैमिली जो होती है, वो ये सोचती होगी ना कि ये हमारे बारे में सोचते भी हैं या भूल गए, राइट? Absolutely. So it goes both ways. Okay. Yeah. So now it makes sense to me. Do you think of me? Oh, that's so sweet. I know. So let me go more further into the questions, and मुझे ये बताएं मुनीबा, so our previous generational parents were dependent, demanding on their children, right? Culturally. So how does this generation children keep up with them, since these times are more fast paced? Well, that's the thing कि वो पहले जो एक कल्चर चल रहा था कि हमारे पेरेंट्स ने अपने माँ बाप का ख्याल रखा, खिदमत की, राइट? वो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी भी थी, राइट? और उनके माँ बाप ने भी किया अपने वालिदैन के साथ, सही है, राइट? बट ये जो अब्रप्ट चेंज आया है, I think after the society wise, after 2000, right? Like millennium, हाँ, बिल्कुल, हर चीज started changing, right? तो that has really caused hardship for the seniors, right? Yes. अब yes, उनकी बदनसीबी ये है सीनियर्स की कि वो तो इसी प्लान में अपनी जिंदगी बैठे थे, नहीं, वो तो बैठे थे इस चीज को प्लान करके कि जब हम एक वक्त बुजुर्ग होंगे तो हमारे बच्चे तो हमारा ख्याल रखेंगे, जैसे हमने रखा था। हाँ, I think that's what they, जैसे हमने रखा था, that was their future plan. Absolutely. But when it switched up onto them, for either reason, अब वो hardship में हैं, right? Because उनके पास फ्यूचर प्लान नहीं है, किस तरह अपनी उम्र गुजारनी है, कहाँ रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। because they did not think that much. जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा, वैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा भी ये लोग ख्याल रखेंगे। But because of the times changed, things have changed, life's changed. I think the kids have करने वाले करते हैं, क्यों नहीं करते, right? You can learn to balance, you can get external help, right? आप part time basis पे ही कर लें, right? You have the options, free options, PSW, nurses coming in, you can do that, right? But
I think time management बहुत बड़ी चीज़ है, right? And if you want to do it, you'll do it. You'll find a way to do it. Absolutely. ऐसी बात नहीं है, लोग करते हैं. वो दिन में आना चाहिए, वो दिन में आना चाहिए. लोग करते हैं. अगर रखना है पेरेंट्स, जैसा for example, जब आप अपने बच्चों का रख सकते हैं ख्याल. बिल्कुल. At any time, right? अगर आप गरीब हो, अमीर हो, it doesn't matter. जब बच्चों की बात आती है, तो you don't neglect that. You don't neglect that. So how can you do with your parents? I don't know. That's a thing. Well, I do reach out to the South Asian seniors at this point, and I do. मतलब जो उस point पे आगे भी जिंदगी उस point में 10 साल के बाद पहुंचेंगे. You know, my suggestion to you is अपने लिए कुछ रखें. सब कुछ कमा के बच्चों के लिए नहीं रखें कि बच्चे को डाउन पेमेंट चाहिए घर की, तो ये चाहिए. ये भी है बहुत शौक है देने का. सारे चीज दे देंगे. हमारा मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरी उसको गाड़ी चाहिए तो वो दे दी. उसकी पे ऑफ कर रहे हैं, को साइन कर दिया, बच्चे पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे. राइट? डोंट डू दैट. बिकॉज अपने लिए संभाल के रखें. या उनका वैसे ही था मेंटालिटी, कल्चर, तो वैसे ही सोच रहे हैं. बट आई थिंक सोच बदलना चाहिए. बदलनी चाहिए. मैं तो कह रही हूँ, मैं तो अपील कर रही हूँ कि प्लीज अपने लिए रखें. आप जो हैं वो अपनी जो लाइफ इंश्योरेंसेस हैं, आप यू नो व्हाट डू यू कॉल, इंजरी हुई उसकी इंश्योरेंस, आप इस लिहाज से अपने आप को सिक्योर करें. पैसा अपने बच्चों पे फुल्ली 100% नहीं लगाएं, क्योंकि आपको वो चाहिए होगा, या आपके पार्टनर जो हैं, आपकी वाइफ या हस्बैंड जो हैं, इफ वन ऑफ यू पास अवे, उनके सर पे एक छत होनी चाहिए, खाने के लिए कुछ होना चाहिए. आपको सिक्योर करना चाहिए. थैंक यू मुनीबा. हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक and we'll be back after the break. Thank you. Welcome back after the break. So हमारे साथ बैठी हैं मुनीबा शेख, and उनके साथ हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक पे. Welcome back मुनीबा. Thank you. So मुनीबा, before we left for the short break, हम बात कर रहे थे about our parents, looking after them and stuff. So मैं next question पे जाना चाहूँगी. And the next question will be, the previous generation daughter-in-laws tolerated bad behavior of mother-in-laws. If you say bad behavior or intolerant behavior, whatever. Since there's awareness with current bahus, they don't tolerate, therefore are labeled badwees. I love this question. I know. So I want you to elaborate on this. I actually really love this question. Yeah. And I thought of this and thought to myself कि देखिए, एक culturally एक चीज़ चली आ रही थी, वो एक्सेप्टेबल हो ना एक्सेप्टेबल हो, ठीक है. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बेसिक चीज़ें, आपको खाना बनाना है, आपको घर साफ रखना है, आपको यू नो देखभाल करनी है, जो कुछ भी है. मगर कभी कभार लोगों के घरों में, ससुरालों में नाजायज़ ट्रीटमेंट किया जाता था. बिल्कुल था नहीं. आई हैव हर्ड अभी भी होता है. बिल्कुल. राइट, कहीं ना कहीं के लिहाज से. मगर पहले तो बहुत ही होता था. पहले होता था कि वो सास भी अगर नहीं बोल रही, तो एक वो अगर बड़ी फुप्पो आ गई है ना लड़के की, तो वो बोल देंगी. राइट, एंड दैट वाज स्ट्रेसफुल. ओह माय गॉड, शी इज कमिंग, आई गॉट वॉच आउट. हो जाती थी ना, बैक बाइटिंग होती है. हाँ, के बारे में कपड़े क्या पहने हैं, तुमने ऐसे कैसे छूट दे दी उसे. यू नो, उस पे हो जाता है, खुश होती है, या सर पे दुपट्टा नहीं रखा. आई नो, यू नो, ये चीजें थी, व्हिच इज फाइन एंड डैंडी. बट the next generation जो forward हुई है, right, उन्होंने थोड़ा सा इसको खींचा है. Okay. Because उनके साथ गुजरी थी. You're right. तो थोड़ा सा हम गए कि चलो 50% they pulled back. हम भी गुजरे हैं. You know, this is what they answer. Yeah. हम भी गुजरे हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मगर वो जो देसियों की एक आदत है ना, उससे मजबूर होके वो कहीं ना कहीं कभी कभार हो जाता है. हाँ जी. राइट, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी. चाहे वो कनाडा हो या पाकिस्तान हो, इंडिया हो, पर हो जाता है. मगर contrary to the other side, I won't drown the sasses, right? The bahus plays a very big role in this. देखें, वो पहले तो उनमें टॉलरेंस थी. अम्मा ने कह के भेजा था कि यार रुखसत होके जा रही हो, अब तुम्हारी मैयत ही आएगी. Whatever it is, deal with it. Yeah. Right? Before, I think it used to happen, not now. And anymore. they did, right? Yeah. But now the parents are like,
they changed, right? The parents stand up for the kids. The girls actually are more independent. They're financially independent, right? जब financially एक independency आ जाती है और एक education भी आ जाता है, तो दिमाग खुल जाता है, and it comes to the point where you don't tolerate that stuff anymore. Absolutely. Right? And you don't have to. If you're, and yes, not required, right? Not required, yes. But वो अब जो सास है ना, उनको लग रहा है कि ये तो बदतमीज हो गई, right? या पढ़ के ज्यादा दिमाग खुल गया, दिमाग आ गया, right? तो उसमें भी I think कभी कभार ऐसी कोई बात नहीं होती, but the bahus make a big deal about it, right? Sometimes it's very basic where it's like, okay, just make sure this, you have a responsibility twice a week, you work, right? मॉडर्न सासें तो ऐसी होती है कि तुम जॉब भी करती हो तो हफ्ते में 2 दिन खाना बनाना, पूरे दिन हफ्ते नहीं बनाने की जरूरत, राइट? तो उसमें भी उनको बुरा लग रहा होता है तो वो मियां से चिकपिक कर रही होती हैं, राइट? सो दिस इज नॉट समथिंग यू नीड टू वर्क इन योर प्रेजेंट फैमिली जस्ट द वे यू डिड एट होम, ठीक है? अगर आप अपनी वालदा को इतनी देर किचन में नहीं खड़े होने देंगे तो आपको सास की भी उतनी इज्जत करनी चाहिए और लिहाज करना चाहिए और ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा वो चाहेगी कि उनकी बेटी इतना काम ना करे, ये भी वैसी चाहे कि उनकी माँ इतना काम ना करे, तो वो आई थिंक इफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग थिंग्स विल बी बेटर। both sides, absolutely. और ये बताएं, balancing your husband's elderly parents and yours at the same time, how do you manage that? बहुत मुश्किल है this day and age, and especially living overseas, right? Back home आपके पास बड़ी सहूलतें होती हैं, आप किसी नौकर को रख लें, किसी को लेबर वर्क ज्यादा है तो लेबर ज्यादा है ना कोई रिश्तेदार आ जाता है हेल्प करने के लिए। यहाँ हेल्प का प्रॉब्लम है, यहाँ पर हेल्प का प्रॉब्लम नहीं है। You think so? Okay. No, I know so. And this is the problem. Okay. कि यहाँ पर हेल्प का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। आपके पास फ्री सहूलतें हैं कि आप जो हैं वो कम्युनिटी बेस्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, right, government funded, you are able to get the resources you need. You can get the PSWs to come take care of them, groom them, shower them. Okay. Help them out with their daily chores. ठीक है? आपको 16-20 hours आपको देते हैं depending on their situation. ठीक है? आपके पास nurses आ सकती हैं, right, जो आके उनकी take care करें, ठीक है? Change करें, physio कराएं, blood pressure check करें, जो कुछ भी है, right? हर लिहाज से you have those सहूलतें, but the only problem is we don't avail it because if external help आने लगी ना, तो फिर हमें ये भी टेंशन होती है कि लोग क्या कहेंगे। बात वही मैं अभी आपसे यही पूछना चाह रही थी कि हम तो सोच लेंगे चलो पेरेंट्स को इनके हाथ में दे देंगे, नर्स बुला लेंगे, ये कहेंगे, but then you know what happens, वो पेरेंट खुद ही कहेंगे कि you know what, we don't need all this stuff when you can't take care of me, let's send me back home, you know what, ये भी होता है, ये मैंने सुना है, पेरेंट्स इतने ना stubborn हो जाते हैं, और plus people are like, देखिए उसके हाथ को छोड़ दिया, उनको सौंप दिया नर्स के हाथ में लोग, I know this, so people, so you know what, because of these reasons हमारी देसी community में ऐसे होता नहीं है mostly of the times. So you have to just go work, neglect your parents, या इसलिए क्या होता है, stress शुरू हो जाता है between both of them. बहुत stress होता है, and कहते हैं कि हमें ना बाहर भेज दो, हमें back home भेज दो, हमारी नहीं। What I and you were there at the media launch, I had representatives from the Alzheimer's Society of Peel. Okay. Right? And they are also linked with the city, Halton region के जो government funded links होते हैं, right? तो उन्होंने कहा कि हमें problem ही South Asians की है कि they need the help. Yes. They don't want to take the help. When we get there, they do it in such a hush-hush way either. कि आप गाड़ी दूर खड़ी करें, किसी को पता ना चले, कोई आ जाए तो दरवाजा नहीं खोलना है। हमारे यहाँ ये जो है ना, लोग क्या कहेंगे? ये बहुत मसला है। बहुत बड़ा मसला। We rather, and she said it, they rather have them be in a room and be not taken care of, yes, rather than use the facilities. Absolutely. Right?
हाँ. And I'm not saying, and बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है. माँ बाप ने तो कर लिया, ठीक है, मगर आप जब एक एडल्टहुड में हो के अपनी माँ बाप की खिदमत करते हैं ना, तो वो ये सिर्फ नहीं होता आपने खाना खिला दिया, आपने वो ये होता है जो आपने बचपन में उन्होंने आपके साथ किया था. डायपर भी बदलने होते हैं, आपको 10 चीजें देखनी होती हैं. Not everybody can handle it. The reality of the fact is. Absolutely. Right? Absolutely, yes, true. बिल्कुल सही. As serious as it is, right? I don't know about you, and I'm not going to put you on the spot, but even to my own self, I don't know कि मैं किस point तक, खुदा ना करे अगर ऐसी situation में हूँ, right? If I would be able to do it. Absolutely. Right? I did it. Like when it came to that point. जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे. उसमें contrary problem ये भी हो जाती है कि in my dad's situation, he was ill for a period of time. He had a rare lung disease, and he became dependent in that way, right? अब हम बहुत चीजें जो हैं वो लिहाज के तौर पे नहीं कर सकते. Right? जी हाँ, बिल्कुल. And he's feeling uncomfortable. Because now male और female का आ गया ना. Right? बिल्कुल. ठीक है. तो वो चीज आप अब छोड़े. No, we're in a different generation. We can do it. Well, what difference does it make, right? But उनकी acceptance की बात आ जाती है. वही है. तो right? But external help लेनी पड़ी, right? And I'd rather have someone registered, a nurse, come and do it, or a PSW that's trained to do it and make sure the wirings and the taar and oxygen की चीजें ना हिलें, rather than me do it myself and cause issues. Of course, right? Yeah, right? So that's one thing. जहाँ तक female to female, फिर आपका siblings में depend करता है कि if you have a brother, then he's supposed to cater to the father in that situation, right? जहाँ पर female हमारे यहाँ तो वैसे ही इन चीजों का थोड़ा सा लिहाज होता है, culturally, religiously, जो कुछ आप कहते हैं, right? But जहाँ तक female to female है, mother है, whatever, the tolerance of doing it, I don't think हम में वो बर्दाश्त है जो हमारे माँ बाप में था. बिल्कुल, absolutely. We don't. And it's not 100% our fault either. No. क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें बिल्कुल princesses और king के तरह पैदा करके पाला है. whether उनके पास पैसा हो ना हो, but उन्होंने तो हमें हर चीज इस लेवल पे बिठा के रखा कि हमारे बच्चे जो है ना वो कुछ उन पे मुश्किलात नहीं सफर ना करें. हाँ, वो आगे के लिए मसला हो गया ना. बिल्कुल. कि वो नहीं कर पाए. बिल्कुल. या कर पा, like they need training for it. I know. और लाइफ भी चेंज हो गई है, पहले जैसी नहीं है. फैसिलिटीज नहीं है. मैं कहूँगी जैसे कि वहाँ जब पहले ना ऐसे था कि लोग फैमिली जो होती थी जी सोशल होती थी काफी. हाँ. एक आवाज दिए तो 4 लोग आ जाते थे. हाँ. आजकल सारे बिजी हैं. हाँ, ये भी बड़ा मसला है. Nobody will क्या आप फोन करें नहीं कर सकते. बच्चों को देखना है, होमवर्क कराना है. They don't make it. Yeah. Conveniently, they don't make it. वो भी things change हो गए, relatives change हो गए हैं. मैं कहूँगी, I think so. It's not the same anymore. It's like not. Before. Yeah, 20 years ago it was different. I think हमें I would like to say कि ठीक है, वक्त बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं, इंसानियत नहीं बदलनी चाहिए. इंसानियत और मोहब्बत नहीं बदलती. बदलनी नहीं चाहिए. बदलनी नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. आप किसी को, अपने वालिदैन को ऐसी सिचुएशन में देखें तो आप किस दिल से आप नहीं करेंगे. नहीं बिल्कुल नहीं. देख ही नहीं पाएंगे उनको ऐसे. राइट? नो वे. तो या तो लोगों के दिल खत्म हो गए हैं या दिमाग खत्म हो गए हैं. पत्थर हो गए हैं दिल. या हाँ, दिल और दिमाग की बात है, कुछ ना कुछ तो हुआ है. But you're right, they don't have time for their parents anymore. मैंने बोला कि जब आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, हाँ, तो बड़ों के लिए भी कर सकते हैं. बिल्कुल. It's not a big issue. तो चले मुनीबा, हम लेंगे और एक शॉर्ट ब्रेक एंड देन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है हमारा एपिसोड. तो लेट्स कंटिन्यू विद मुनीबा आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. थैंक यू वेरी मच. Welcome back to my show, Lights, Camera, Action, and we're sitting with Muneeba Sheikh today, and काफ़ी ज़बरदस्त हम मुनीबा से बातें कर रहे हैं. तो let's continue. मुनीबा, welcome back. Thank you. तो मुनीबा, मेरे पास एक और एक सवाल है आपके लिए. So, custom of a son to take care in Desi culture, present day, the responsibility of other siblings taking care of parents.
ये कल्चरली एक चीज रही है कि बेटे जो हैं वो ख्याल रखेंगे. अच्छा. Right, which includes क्योंकि यूजुअली ऐसे होते हैं, हाँ, बेटे बहू के पास रह जाएंगे क्योंकि obviously they cannot live with their daughter and son-in-law. हाँ, but it's switched. अब वक्त बदल गया है. करते हैं लोग, हाँ. नहीं, अब ये हो गया है कि वो बेटियां बेटे से ज्यादा कर रहे हैं और दामाद जो है वो बेटों से ज्यादा कर रहे हैं. टाइम से शुरू हो गया है. Right, but I think एक इक्वालिटी होनी चाहिए सिबलिंग्स में. ठीक है, किसी पे भी बोझ या जोर नहीं होना चाहिए. इक्वली होना चाहिए, बांट सकते हैं कि सबकी कंट्रीब्यूशन होए. राइट, सबके माँ बाप है ना, एक के तो नहीं है. राइट, तो इग्नोर करना या निग्लेक्ट करना या अबैंडन करना जो है वो you're not being a good sibling, and because you're not caring for the other siblings that are working and taking care of them day and night. मुझे ऐसे भी होता है कि बड़ा बेटा होता है, उसको बहन की शादी करानी होती है, बट माँ बाप को भी देखना होता है, प्लस ही इज मैरिड एज वेल. वो केस पे क्या होगा? जब सिबलिंग ऑब्वियसली जब वो छोटी बहन होगी तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगी ना. अगर एज गैप इतना हो, हाँ, राइट, तो उसमें ये हो जाता है कि बहन की भी शादी करानी है, सब करना है, होता है. हाँ, वो फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो थोड़ा सा हो जाता है. बट द थिंग इज, आई थिंक even girls nowadays they study. पहले तो नहीं पढ़ाई करती थी ना, ज्यादा नहीं. पहले तो ये होता था मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, बेटा, like that's it, you're getting married, right? But they're working, they're independent young women, they don't marry, they don't rely on the fact that मेरा भाई मेरी शादी करेगा. Right? Times change. So times have changed that way. Yeah, absolutely. और ये बताएं कि the fight for parental assets in Desi culture, this is a hot topic. This is so hot, and it's everywhere. Yes, this is an issue. Everywhere, like ऐसे नहीं इंडिया पाकिस्तानी, but मैंने देखा कनाडा, अमेरिका, हर जगह है. हाँ, तो मैंने एक अपील की थी लोगों से जो एक सर्टेन एज ग्रुप में हैं. आप 40 के बाद जो है वो अपना पैसा अपने लिए, अपनी बीवी के लिए जमा करना शुरू कर दें. Right? Don't rely on your children कि वो हो ना हो, क्या हो क्या नहीं हो. अपनी सेविंग्स करें. हाँ, बिल्कुल अपनी सेविंग्स करें. जहाँ पर लगाना है बच्चों के लिए, बिल्कुल जितना कर सकते हैं कर लें. जितना, हाँ, keep to yourself too. Exactly. अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए आप बिल्कुल रखें. Because ये जो एसेट्स का लड़ना झगड़ना जो है ना, सालों से जो चलते आ रहा है, right? This doesn't solve anything. वो माँ बाप के इंतकाल के बाद भी चले जा रहा होता है और लड़ाई कोर्ट्स तक चले जाते, कोर्ट तक चले जाते हैं सिबलिंग्स. बिल्कुल सही है. तो अपनी जिंदगी में this is very important. There's another one. Okay. कि आप अपनी जिंदगी में get a will made. Yeah, I think wills are important. You have to make a will. Power of attorneys. Yes. Right. Make sure you know कि ये कितना आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर जाना चाहिए और किसको जाना चाहिए, और आपकी वाइफ के लिए, आपके हस्बैंड के लिए कितना होना चाहिए कि आप आपस में लड़े नहीं, पहले से सबको. बिल्कुल सही है. और I don't think you have to wait until you're old and you're about to die. Yeah, no. You have to make a will any time of your. बिल्कुल. Like कभी ऐसे. खुदा ना करे कभी भी किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए. You don't know. Yeah. So I think any time. Preparation is the key. Important है. हाँ. आप मुझे ये बताएं, how do we reduce the risk of elder abuse? Like awareness. What can we do? Awareness. Like now we are doing it. Yes, awareness is the best way, and the thing is, like I said, कि अगर मैं खड़े होके ये स्पीच करती या लोगों को बताती तो कौन सुनता कि बच्ची जो है हमें क्या बता रही है, right? But the thing is, when you do it through an art, it's acceptable, it's absorbable, and it's right. You remember it, and people remember it, right? Yeah. So it works that way. Perfect. But biggest thing is that if you feel that you are in a situation, a circumstance, you need to speak up about it. Right? You need to tell the authorities. Don't be quiet. You need to, चुप होके, क्योंकि कुछ भी है. There are people. ये क्या कहेंगे नहीं सोचना चाहिए. There are people. Shortly, I'll let you know that किसी ने अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को घर में एक कमरे में 2 साल बंद रखा. ठीक है? तो उन्होंने इसलिए नहीं बताया. जब फाइनली वो बाहर निकले, उन्होंने इसलिए नहीं बताया जब पूछा गया कि कुछ नहीं, हमारे बेटे ने तो घर में रखा हुआ था. ठीक है? They actually wanted to take a positive side of it, right? कुछ positive. Cover करना जो है ना, नहीं करना चाहिए. इससे क्या होगा पता है? हाँ. उनको encouragement मिल जाएगा. बिल्कुल, और शेयर मिलती है.
Don't do never it. do that. Yeah, I think you need to speak up. Yeah. Never be quiet about it. हाँ. And I think I would say that's a crime. किसी भी abuse जो होता है, Yeah. right? It's a crime. वो psychologically हो, वो emotionally हो, physically हो, वो financially हो. आपकी अगर CPP लिए जा रही है pension, ठीक है? Right? That's abuse too. That's financial abuse. Absolutely. बहुत लोग रखते हैं इसलिए घर में कि कुछ नहीं तो extra income आ रही है. Abuse is abuse. Abuse is abuse. Absolutely. थैंक यू मुनीबा, काफ़ी अच्छा टॉपिक पे हमने आज बात की और मैं अब कंटिन्यू करना चाहूँगी आपकी सिंगिंग करियर पे, बिकॉज हाँ ठीक है ना. थैंक यू. तो लेट्स मूव फर्दर. और मैं चाहूँगी पहले कि जो डू यू थिंक ऑफ मी का जो सॉन्ग है जो आपने कंपोज किया है, राइट किया है, आई वांट यू टू सिंग फ्यू लाइन्स फॉर अस. Sure. Far, far away, I went away astray. Hear me now. From far away, I heard you say, please stay. Oh, do you think of me? Do you miss me? Do you love me the way you love me? I can see you. Can you see me? Oh, oh. तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया. छेती आवी ते तबीबा नीते मैं मर गईया. ओ छेती आवी ते तबीबा नीते मैं मर गईया. Do you think of me? Do you miss me? Do you love me the way you love me? I can see you. Can you see me? Whoa, whoa. How beautiful was that? Oh my God, I wanna applause for you. Thank you. So beautiful singing, Muneeba, beautiful. Like, I have heard you sing, but this song actually you sung in English and it was brilliant. मैं आपको हमेशा हिंदी में गाते हुए सुनी थी उर्दू में, but this was brilliant. So let me move on with thank you so much. Questions. Yes, no problem. It was lovely. I just wanted to hear you. I'm glad you enjoyed. So tell me, what kind of music you like? Like, what is your kind of music? So my original genre is ghazals. Okay. Both my parents used to sing ghazals. Nice. So I sing ghazals. Obviously, a little bit of semi-classical. Okay. And being raised in Montreal, born and raised in nice. Canada, I love R&B. Oh, nice. Okay. And I also love Sufi music. Very nice. I like that vibe, that tone. Yeah. And because I can hit the lower notes as well, vocally, तो वो range में अच्छा हो जाता है मेरे लिए. I benefit from that. Absolutely, and you sing very beautifully. Thank you so much. Loved hearing you again. Thank you. And what is your main goal in your music career? To advocate. Advocate. Huh. Okay. Like, so this is one topic, one song. There's going to be another song, another topic that Nice. Our South Asians don't want to hear. Beautiful. I want to advocate through my music. And if I can, you know, मैं 10 घर भी sort out कर लूँ, या you know किसी में awareness आ जाए या कोई seniors को assistance मिल जाए, तो I've done my part. Nice. And what separates you from other artists? What separates you from other artists? I think, I believe, and I'm not saying this because I'm not full of myself. Okay, but I'm confident that I believe I am a decent singer. I'm decent in presentation. Okay, I find that a lot of artists don't concentrate on when they're performing what they're wearing. Okay. How they present themselves. And that is important for you. Yes. Presentation बहुत ज़रूरी होती है. And तहज़ीब तमीज़ comes part of participation. I think if I meet, you know, example, if I'm going to meet a senior executive compared to me meeting a clerk, I'm going to be the same way. Okay. You will not... and that's the Sufi thought, right? That's nice. It should be that way, right? And it sets me apart particularly because
ये जो फील्ड है ऑफ म्यूजिक, हर इंसान, हर आर्टिस्ट अपने आप को बहुत समझता है आज, राइट? और वो हर किसी से ऊपर भी होना चाहता है, बिल्कुल, राइट? मगर कंपटीशन बहुत है, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अच्छा इंसान होना वो ही सबसे बड़ी बात है. And it reflects off in your. I love that answer. It reflects off in your performance. It reflects off in your personality as and your work. So I would say, when I spoke to you before about "Do you think of me" title, and now you have actually spoken about humanity. Yes. Both the sides. So, yes. इंसान को humanity के साथ ही चलना चाहिए. बिल्कुल. ना ज़्यादा दिमाग होना चाहिए. बिल्कुल. कहीं भी आप कोई भी प्रोफेशन में चले जाएं, you have to be very humble. बिल्कुल. जाना सबको, वो किसी भी रेंज में होए, ऊपर होए या नीचे होए, जाना सबको मिट्टी में ही है. I know. ठीक है? तो I think if you keep a balanced, neutral mindset, right? And सबसे बड़ी चीज़ है, अगर दिल आपके सीने में है तो उसी वक्त वो ह्यूमैनिटी आएगी, वरना अगर दिमाग ओवरपावर कर देगा तो गया. बिल्कुल गया. तो थैंक यू वेरी मच मुनीबा. बहुत मजा आया मुनीबा आपसे बात करके आज, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली है. मुझे पता है कि ऑडियंस को भी काफ़ी नॉलेज आई होगी अबाउट योर डू यू थिंक ऑफ मी टाइटल, और आपका जो ये इवेंट आपने किया था और सब जो आपने बोला है आज. Thank you so much, Kubra. It's a pleasure speaking to you on, इतने important topics and stuff. I think, and I think we've covered stuff we haven't covered in the other interviews, जो बहुत ज़रूरी होता है. मुनीबा मेरे साथ second time बैठी है. जी बिल्कुल. हाँ, so it's really nice. I know. Thank you so much, Muneeba. Thank you to your channel as well. Thank you so much for having me, and all your viewers. बहुत शुक्रिया. Thank you so much for passing so good information about elderly parents and our culture, everything. You covered almost everything tonight. Thank you very much. Take care of yourself और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें. बिल्कुल. Thank you. So ये थी हमारे साथ मुनीबा शेख, and मुझे पता है कि आपने काफ़ी enjoy किया होगा हमारी बातें, और काफ़ी knowledge आपको हासिल हुई होगी आज. So next week I'll be back again on my show Lights, Camera and Action with Kubra with another topic, another guest. So stay tuned until next week. So I'll see you back. Good night. Have a good evening. Take care. Hi, I'm Kubra. I'm bringing you Lights, Camera and Action, a brand new show every Wednesday at 7 p.m. only on Awaz Entertainment.